Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of grade 7. Welcome to your science class. Today we are going to complete chapter number 2, plants and their system, with the last topic, flowers. This topic is given on pages 26 and 27 of your science textbook. Now, dear students, first we know about what are flowers. So, flowers contain the plant's male and female reproductive organs. So, basically, flowers are reproductive parts of plants. These are reproductive parts. And why these are called the reproductive part? Because they are used to increase the number of plants. These are those organs which increase in or reproducing different types of plants from a single parent plant or from a male and female plant as well. So we can say that flowers contain the plant's male and female reproductive organs. And what are these male and female? So we can divide them into the male category and then female reproductive organ. And there are many types of flower as well. So this is not enough for the discussion or for introduction about the flower, but we can also say that there are different types of flowers, and these different types of flowers, not only due to their smaller size, but also they are usually brightly colored. So two important properties which are present in the flower is related to their brightly colored, that they are brightly colored. And second most important thing which is present in the flower is their sweet smelling. अब इसमें आपको मैंने बेटा क्या बताया कि फ्लावर्स क्या हैं. फ्लावर्स यानी फूल पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं. जो दो अहम रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं, या यूँ समझ लें कि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है और उसके दो इम्पॉर्टेंट जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें मौजूद होते हैं. वन इज़ कॉल्ड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड अदर वन इज़ कॉल्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स पाए जाते हैं और ज़्यादातर उनमें जो खसूसियात होती हैं वो ये होती हैं कि आमतौर पे ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं. उनके रंग जो हैं वो बहुत खुशनुमा होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और उनमें स्वीट स्मेलिंग जो है वो होती है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू के ये हामिल होते हैं. जिसकी वजह से क्या होता है कि कौन सी चीज़ इनकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, तो दे एक्चुअली अट्रैक्ट टुवर्ड दैम, कि इनके तरफ जो है वो इंसेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. बर्ड्स जो हैं वो आके इन पे बैठती हैं, ये परिंदे आके बैठते हैं, और साथ साथ एक और जो है वो एनिमल यानी बैट्स जो हैं वो आके इनसे जो है यूँ समझ लें कि इनका जो है वो नेक्टर हासिल करते हैं. इनके खुशनुमा रंगों से जो है वो अट्रैक्ट होकर इनकी तरफ माइल होते हैं. सो दीज एनिमल्स कम टू फीड ऑन द शुगरी नेक्टर. अब वो क्या वजह है कि क्यों इसकी तरफ ये तमाम जो है एनिमल अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि जो भी आपका एनिमल फ्लावर की तरफ मूव करता है, आके इन पर आके बैठने की कोशिश करता है, उसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि वो इनके कलर से जो है वो अट्रैक्ट होकर आके इस पे बैठ गया, बल्कि उसका मकसद होता है अपने लिए फूड हासिल करना. और वो फूड उसकी कहाँ होती है? दिस फूड इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इट्स पेटल, दैट इट इज़ प्रेजेंट और स्टोर्ड एट द बेस ऑफ इट्स पेटल. यानी ये पेटल्स हैं और पेटल्स के बिल्कुल नीचे जो है वो इसका शुगरी नेक्टर मौजूद होता है. शुगर से भरपूर जो है वो शुगर यानी मीठा जो है वो नेक्टर क्या चीज़ है? आप इसको जूस भी कह सकते हैं. तो शुगरी जूस जो है वो पेटल्स के बिल्कुल बेस पे नीचे मौजूद होता है, और ये एनिमल्स जो है वो इसी शुगरी नेक्टर को जो है वो अपनी फीड के तौर पे यानी फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से अपनी फूड हासिल करते हैं. Dear students, this diagram represents structure of a flower. Structure of a flower consists of, first of all, here petals,
you can see the red colored area here. This red colored part of the flower is called the petal. Now what is the special thing about the petal? That petals are brightly colored. Brightly colored means कि पेटल्स जो होती हैं वो फूल का वो हिस्सा है जो बहुत खुशनुमा रंगत के हामिल होते हैं, यानी पेटल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर्स के हामिल होते हैं एंड हैव अ सेंट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। और इनके अंदर क्या चीज़ होती है? इनके अंदर खुशबू होती है। एंड हैव अ सेंट, सेंट का मतलब खुशबू, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन होती है इंसेक्ट की वो इनकी तरफ बहुत ज़्यादा होती है। इंसेक्ट्स इनकी खुशबू की वजह से, इनके खुशनुमा रंगों की वजह से इनकी तरफ यानी पेटल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इवन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ना सिर्फ ये कि वहाँ से अपने लिए फीड यानी फूड हासिल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर, बट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन ऑफ प्लांट। Along with it, you can also observe another part of the flower, and another part is called stamen. Stamen. And what is a stamen? Stamen is basically the male reproductive organ of the flower. Male reproductive organ. ये फूल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जैसे कि हमने बात की थी कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, मेल एंड फीमेल। तो स्टेमन यहाँ पर जो आपको ये ब्लू कलर्स में नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ मल्टीपल नंबर्स होते हैं, किसी फूल में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। सो दीज आर स्टेमन्स एंड स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। अनदर important part of the flower is are these green leaves, and these green leaves of the flowers are called sepals. इनको sepals कहा जाता है। And what is the function related to the sepal? They protect. Their role is protection. So they protect the flower when it is in the bud form. Protect the flower यानी ये flower को उस वक्त protect करते हैं जब इट नॉर्मली किस फॉर्म में होता है फ्लावर? इट इज़ इन बर्ड फॉर्म, जब ये कली की शक्ल में होता है। सो प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज़ इन बर्ड फॉर्म, जब फ्लावर एक कली होता है यानी पूरी तरह से फूल खिला नहीं होता बल्कि एक कली की शक्ल में। कली का मतलब क्या है कि बिल्कुल बंद होता है इस तरह से, यानी बिल्कुल एक कली की शक्ल, ये होती है कली की शक्ल। तो इस वक्त ये सेपल्स क्या करते हैं? ये सेपल्स इस फ्लावर को जो कि बंद हालत में यानी एक बर्ड की शक्ल में, कली, बर्ड किसे कहा जाता है उर्दू में? यानी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी बर्ड है और उर्दू में इसको फूल की कली कहते हैं। तो फूल को बहुत ही उसकी नाजुक हालत में जब वो पूरी तरह खिला नहीं होता उस वक्त ये सेपल्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये आपके फ्लावर्स के सेपल्स हो गए। Now the next thing which is present at the base of petal is called nectar. And as I told you, what is nectar? Nectar क्या है? Nectar is basically a sugary juice, a sugary liquid, or you can also say a sugary nectar which is present at the bottom of the petal. It is a sweet liquid. ये क्या है? ये कहाँ मौजूद है? At the bottom. पहले तो आप इसकी लोकेशन बताएंगे। प्रेजेंट एट दी बॉटम ऑफ और बेस ऑफ पेटल्स। एंड बेसिकली नेक्टर क्या है? इट इज़ ए स्वीट लिक्विड दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट। और ये क्या है? ये एक मीठा जो है वो लिक्विड है जिसमें यूँ समझ लें कि चीनी मिली हुई है, बहुत ही शुगरी सब्सटेंस है। और इसकी स्वीट नेचर या स्वीट लिक्विड होने की वजह से क्या चीज़ इसकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं? तो इंसेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं फॉर देयर फूड। इंसेक्ट्स इस स्वीट लिक्विड को शौक से अपने लिए फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नाउ अलॉन्ग विद इट यू कैन ऑल्सो फाइंड वन मोर स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ flower is called carpel. Carpel. And what is carpel? Carpel is basically the female reproductive organ, the female reproductive organ of the flower.
Just like you can here observe that stamen is the male reproductive organ, carpel is the female reproductive organ, which is also involved in the process of reproduction. And this whole black area is actually related to the carpel. Now we will study the detailed part of carpel as well as stamen, that what are the basic parts of stamen and carpel. Now dear students, as you know that flowers are the reproductive organs of the plant, and due to their reproductive nature, they are actually divided into two parts or two organs, in which the male reproductive organ is called stamen and the female reproductive organ is called carpel. Stamen is further divided into two parts. Upper part is called anther, which contains anther sac, and in which male reproductive cells are produced, which are called pollen grains. So these are male reproductive cells and produced in anther, while this stalk like structure is called filament, and this is normally used to support the anther which is present on the top. On the other side, you can observe the three main parts of a carpel. First, upper part is called stigma, which is basically sticky in nature. Sticky means chipakne wali. And due to its sticky nature, the pollen grains which are produced in anther, they are carried by means of air or insects and reach to the stigma and stick to stigma due to their sticky nature. So pollen sticks to the stigma during the process of pollination. What is this process called? Pollination. Along with it, you can also find a stalk which is present just below the stigma, and this filament like or stalk like structure in the carpel is called style. So style is a stalk just like filament. So filament is also a stalk, जिस तरह से stalk का मतलब होता है टहनी. In the similar manner, style is also a stalk that holds the stigma in the air to collect the pollen. So style supports the stigma to hold it first of all, and then the stigma gets the pollen grains cells from the anther by the process or during the process which is called pollination. Now at the bottom of the carpel there is one more part which is called ovary. And what is the function of ovary? Ovary protects the ovule because ovary contains ovules. And what is the function of ovary? Protecting or protects the ovule which are present inside the ovary. So what is ovule here? So we can also label here ovule. What are these ovules? Ovule or egg cells, which are the female reproductive cells, contain the female reproductive cell as well, you can say. So what is ovule? Ovule basically called eggs which contain the female reproductive cell. So this is the main structure of a carpel consisting of three parts, while stamen consists of two parts, anther and filament. Now students, open book page number 27, where you will find some important flowers present in our world. And these beautiful flowers include this poppy flower, and stamen of this poppy flower are in a ring around the carpel. So here you can observe the poppy flower having red colored petals around, and inside you can observe the stamens of this poppy flower which are in the present or in the form of ring around the carpel. So carpel is present in the center, while the stamens are present in the form of round circle around the carpel.
Now in this case these flowers are called apple blossom flowers and they have a sweet smell and lots of nectar to attract insects. इन फ्लावर्स की ख़ास बात ये है कि ये स्वीट स्मेल रखते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा नेक्टर होता है, यानी लिक्विड होता है फ्लावर्स का, जिसको हम शुगरी नेक्टर भी कहते हैं, और इसकी वजह से इंसेक्ट्स इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. These flowers are called tree flowers and tree flowers hang in the air so wind can carry pollen away. जैसा कि ये आपको फूल नज़र आ रहे हैं कि इनके जो मेन इनका जो डायरेक्शन है वो एयर की तरफ है, यानी ये फूल कहाँ पर है, हवा की तरफ इनकी हैंगिंग हुई हुई, हवा की तरफ ये हैंग हुए हैं, लटके हुए हैं, जिससे अगर विंड चलेगी यानी हवा चलेगी तो इनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो हवा से एक जगह से दूसरी जगह स्कैटर्ड हो जाएंगे, बिखर जाएंगे. इस तरह इनको रिप्रोडक्शन में मदद मिलेगी. On the other side you can observe the gorse flowers and these gorse flowers are completely enclosed. You cannot see the reproductive organ at all. अब यहाँ पर देखिए कि ये फ्लावर्स कैसे हैं. नीचे की साइड पे कुछ स्पाइंस नज़र आ रहे हैं, कांटे नज़र आ रहे हैं, ऊपर की साइड पे ये येलो फ्लावर्स हैं. सो गॉर्स फ्लावर्स क्या हैं? इन गॉर्स फ्लावर्स के अंदर आपको इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी स्टेमन और कार्पल नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर बंद होते हैं. नाउ ऑब्जर्व दिस फ्लावर. कैन यू गेस? यस, दिस इज सनफ्लावर. इट इज़ एक्चुअली लॉट्स ऑफ टाइनी फ्लावर बंडल टुगेदर. सो बेसिकली अगर आप इस फ्लावर को देखें, इसे सूरजमुखी का फूल कहा जाता है और इसमें इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे जो हैं वो फ्लावर पेटल्स होते हैं, यानी छोटे छोटे पेटल्स होते हैं. और एक बात और आपने नोट की होगी कि जैसे ऊपर की तरफ एक बंडल बना हुआ है फ्लावर का, इसी तरह नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरह कई फ्लावर्स बंडल की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा पेटल्स होती हैं. So this is sunflower. Now there is a fact given on the same page number 27. Did you know? Rafflesia. Rafflesia is the world's largest, heaviest and one of the most smelly flower in the world. Rafflesia को दुनिया का सबसे बड़ा, भारी और स्मेली यानी बहुत ज़्यादा स्मेल का हामिल फ्लावर समझा जाता है. It grows to 1 meter wide and weighs about 10 kgs. ये 1 मीटर चौड़ा और इसका वज़न तकरीबन 10 किलोग्राम के बराबर यानी 10 किलोग्राम होता है. Rafflesia smells of rotting flesh to attract flies for pollination. जैसा कि बताया गया कि इसकी स्मेली फ्लावर होती है, यानी रफलेसिया की स्मेल अच्छी नहीं होती, इसको आप बू कह सकते हैं. एंड इसकी स्मेल जो है वो रॉटिंग फ्लैश से मिलती जुलती है, यानी जैसे गोश्त ख़राब हो जाता है, तो जैसे गोश्त ख़राब हो जाता है उसकी स्मेल जैसी होती है, इसी तरह रेफ्लेसिया की स्मेल होती है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं, जो फ्लाइज़ हैं, स्पेशली मक्खियाँ वगैरह, वो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जिससे इस पौधे यानी रेफ्लेसिया को पॉलिनेशन में मदद मिलती है.